Hello bachcho, let's see this question. The question says, what will happen when human RBCs are placed in 2% of NaCl solution? क्या होगा जब हम ह्यूमन आरबीसी को 2% NaCl सॉल्यूशन में रख दें? फिर द की कॉन्सेप्ट इज आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। उनका नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड इन हेल्दी मैन। Count is 5 to 5.5 million per mm³ of blood. लाइफ स्पेन कितनी होती है इसकी? लाइफ स्पेन इज 120 days. Every 100 ml of blood has 12 to 16 gram of hemoglobin. 100 ml of blood has 12 to 16 gram of hemoglobin. ऐसा क्या होगा ह्यूमन आरबीसी में जब हम उसे 2% NaCl सॉल्यूशन में रख देंगे? The red blood cells will lose water. Cell lose water and will shrink. वो अपना वाटर लूज कर देंगी एंड श्रिंक हो जाएंगी। इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। द श्रिंकिंग टर्म इज प्लाज्मोलाइसिस। Shrinking. The 2% NaCl solution outside the red blood cells is hypertonic. Hypertonic is it contains more salt than the red blood cells. The 2% of NaCl solution outside the red blood cells is hypertonic. Hypertonic का मतलब है it contains more salt than the red blood cells. Intracellular concentration of red blood cells is concentration of red blood cells is more dilute or hypotonic compared to salt solution. Is more dilute या फिर hypotonic. Hypotonic compared to salt solution. क्योंकि salt solution तो hypertonic होता है, जिसकी वजह से salt solution act as hypertonic solution when compared to the RBC. Therefore, water will move out of the RBC by osmosis and result in shrinking of RBC. Shrinking का मतलब होता है water moves from the hypotonic solution to the hypertonic solution. Shrinking of RBC occurs. Water moves from a hypotonic solution to hypertonic solution. I hope you understood it well. Best of luck बच्चों।